This is All India Radio. Welcome to the business news program Money Matters. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम शेयर बाजार, कारोबार और अर्थ जगत की ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आइए शुरू करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेक। Supported by massive vaccination drive in the country, Sensex and Nifty surged more than 2% during the holidays shortened week. Sensex regains 50,000 mark, Nifty reclaims 14,800 level. And the US Labor Department have sought public feedback to determine the wage levels of H-1B visa holders. And now the news in detail. The domestic stocks ended with robust gains this week, subsiding the resurgence of coronavirus cases in the country. Experts said massive vaccination drive in the country along with positive global cues have boosted the investor sentiment. In India, over 7,30,54,000 doses of COVID vaccine have been administered to the beneficiaries in the country so far. Union Health Ministry said that more than 30,93,000 doses were given to the beneficiaries in the last 24 hours. Meanwhile, the country's COVID-19 recovery rate reached 93.36%, with the total recovery of more than 44,000 patients in the last 24 hours. The ministry said over 1,15 lakh patients have already been recovered from this disease. Presently, the total number of active cases in the country is over 6,58,000, which comprises only 5.32% of the total positive cases. To discuss the stories with us, we have the market expert Sharad Kohli with us. Sharad, we welcome you to Money Matters. Thank you so much, Rajesh, and a very warm welcome to all the listeners of Money Matters. Sharad, this grim situation that COVID has brought about again to us, this is surely going to have repercussions on the consumerism or the spending that was actually initiated by the consumers over the past 6-7 months. You think we are going to go back to the old situation that we experienced during 2020? Well, Rajesh, maybe not exact replication of what happened in 2020. But the way corona cases are growing, I mean, we witnessed almost 90,000 cases yesterday. So if situation goes out of control, maybe not a similar lockdown which we observed last year, that was really, really scary. But, something like that may have to be done in a very limited way because, but my take from an economic point of view, Rajesh, is that if the supply chains get disrupted and if people are not able to go and buy, I mean, if I talk in simple terms, if you can't go to a shop, go to take services of somebody because of the logistic restrictions, I think the fallouts would be quite similar to what they were earlier, if not exactly similar. So therefore, the word of caution is there. We observed the GST collection shooting up to 1,24,000 crores in the month of March, which was really, really encouraging. We also observed the vaccination drive, as you rightly said, catching up with 7 crore people. But we are still miles away from 135 crore, at least 60 to 70 crore adults who need to be vaccinated, although a new study shows that even the younger population, even the school going and the youth are being affected by COVID. So therefore, along with some of the positive triggers coming from the US, coming from the GST collections, coming from vaccination, there are neutralizing factors of this corona surge, which are, sort of negating the positive sentiment. So I still feel I continue to be on my stand that volatility is going to remain, whereas there would be certain positive factors in the coming weeks. And a major positive factor, Rajesh and Amrish, which I want to inform to the listeners is that the results season, the earnings season is going to set up. So therefore, we expect the year-on-year results because 31st March is already gone. We've started with the news. So not just the quarter four,
We are also going to have year-on-year results, the full year results, which are going to be announced by the companies starting from now until the middle of April or probably 20th of April. So I think it is typically observed. I would like to again inform the listener that it's typically observed that when the results are expected, you observe the market sentiment of that particular sector, that particular stock turn bullish. But when the results get announced, even if the company has done better, you observe profit booking and the stock begins to fall. So I think that volatility also has to be factored in the next week, I would say. Okay. So wherever like we saw the automobile results coming, we saw the car sales, the automobile sales jumping twice or thrice in certain companies. So you might see the result of that. But then again, it's going to be a mixed bag as far as the stock markets are concerned, and the week may observe some bullish movements being negated by the corona factor, as you rightly said. और चलते हैं शेयर बाजार का साप्ताहिक हाल भी जान लेते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में अवकाश के चलते छूटे हुए सप्ताह में 2% से अधिक का उछाल दर्ज किया गया। इस सप्ताह सोमवार को होली का अवकाश था, जबकि शुक्रवार को गुड फ्राइडे की छुट्टी थी। पिछले महीने रिकॉर्ड जीएसटी कर संकलन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की $2 खरब 25 अरब डॉलर की ढांचागत योजना से निवेशकों में उत्साह दिखाई दिया। विश्व के इक्विटी सूचकांकों में तेजी का असर घरेलू शेयर बाजारों पर पड़ा और बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स फिर से 50,000 को पार कर गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी फिर से 14,800 अंकों के ऊपर चला गया। सप्ताह के दौरान सेंसेक्स 1,021 अंक यानी 2.08% की बढ़त के साथ 50,030 अंकों पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 360 अंक यानी 2.48% बढ़कर 14,867 अंकों पर जा पहुंचा। मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांकों ने सेंसेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया। मिड कैप इंडेक्स 2.73% बढ़ा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 3.91% की बढ़त दर्ज की गई। तो जैसा कि शरद आपने पहले ही कहा कि देश के अंदर जिस तरह का हमें पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं, खासतौर से जीएसटी संकलन की जैसे आपने बात की, आपको क्या लगता है कि जीएसटी संकलन आने वाले महीनों में कितनी उसमें वृद्धि आपको दिखाई पड़ती है और क्या ये एक मेजर फैक्टर होगा अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए? जी हाँ, जीएसटी, क्योंकि जीएसटी के नंबर सीधा ये इंडिकेट करते हैं कि हम लोग दुकानों से सर्विसेज में कितना माल, कितनी सर्विसेज खरीद रहे हैं। सीधा वो आपको एक तरह से, आप संतरा लीजिए, उसका निचोड़ निकाल लें तो वो निचोड़ आपको बता देता है संतरा मीठा था या खट्टा था। तो जीएसटी कुछ इस तरीके का है। पर मुझे लगता है जो मार्च में हम लोग फिंगर्स क्रॉस रखते हैं और उम्मीद करते हैं आगे बढ़ेगा। पर क्योंकि कोरोना के केसेस जिस प्रकार बढ़ रहे हैं, हमने कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सुना, उन्होंने अब कार्ड्स अपने चेस्ट के पास रखे कि लॉकडाउन होगा कि नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये बढ़ता गया तो हमें बहुत कठिन कदम उठाने पड़ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है अगर हम लोग सावधानी नहीं बरतेंगे और कोरोना को इसी प्रकार बढ़ने देंगे। हम लोग में हम सब इंक्लूडेड है। तो मुझे लगता है कि सरकार को मजबूरन वो कदम उठाने पड़ेंगे जिस कदम से हम डर रहे हैं, और वो सप्लाई चेन को इफेक्ट करेगा, वो कंज्यूमर्स को इफेक्ट करेगा, वो जीएसटी को भी इफेक्ट करेगा। ऐसे में शेयर मार्केट उस पर रिएक्ट ना करे, ये संभव नहीं है। ये मेरा अपना मानना है। Moving on, the U.S. Department of Labor has sought feedback from the public to determine the wage levels of the employment of various immigrants and non-immigrants, including persons on the H-1B visas. The visa is the most popular after-work visa among Indian professionals. The department has given 60 days for the feedback. मनी मैटर्स के इस बुलेटिन में आज बस इतना ही। शरद, इस कार्यक्रम में भाग लेने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में व्यापक स्तर पर हो रहे कोविड टीकाकरण के चलते सेंसेक्स और निफ्टी में 2% से अधिक की तेजी दिखाई दी। अवकाश के चलते छोटे हुए सप्ताह में सेंसेक्स 50,000 और निफ्टी 14,800 अंकों के पार चला गया। और अमेरिकी श्रम विभाग ने H-1B वीजा धारकों के लिए वेतन भुगतान के स्तर निर्धारित करने के लिए जनता से राय मांगी। And that's all we have in this edition of Money Matters. We will like you to join us at 6:30 p.m. in our program Market Mantra. Till then, goodbye.